8 Science Chapter 18 Pollution of Air and Water, and in this video we will discuss about air pollution. First of all, what is the importance of air? We can survive for some time without food, but we cannot survive even for a few minutes without air. This simple fact tells us how important clean air is to us. Air consists of a mixture of gases. By volume, about 78% of this mixture is nitrogen and about 21% is oxygen. Carbon dioxide, argon, methane, ozone and water vapor are also present in very small quantities. Now, we will discuss one activity. You may have covered your nose while passing a brick kiln emitting smoke. Now, what's the meaning of this brick kiln? ब्रिक का मतलब होता है ईंट और किल्न का मतलब होता है भट्टा, ईंट बनाने का भट्टा, जहां से धुआं निकलता रहता है, स्मोक निकलती रहती है। देखिए ये डायग्राम में दिखा रखा है, ये आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। और started coughing while walking on a busy road. On the basis of your experience, compare the quality of air at the places given below. A park and a busy road. When we visit a park, we find it full of fresh air. And in a busy road, we find it polluted due to fumes, smoke, dust and sound. A residential area and an industrial area. An industrial area is more polluted as compared to residential area, as industrial area gets polluted with chemical pollutants, toxic gases, etc. A busy traffic intersection at different times of the day. For example, early morning, afternoon and evening. In early morning there is less pollution, but in afternoon it becomes a little more polluted than morning, and in the evening it becomes extremely polluted. A village and a town. A town is more polluted than a village. So we can conclude there is the difference in the amount of smoke in the atmosphere at different places or at different time. Okay. Now what is air pollution? When air is contaminated, contaminated का मतलब होता है impurity mix होना. When air is contaminated by unwanted substances which have a harmful effect on both the living and non-living, it is referred to as air pollution. Now, air pollutants. The substances which contaminate the air are called air pollutants. Now, what are the sources of air pollutants? Natural sources like smoke and dust arising from forest fires or volcanic eruptions. Human activities, air pollutants from factories, power plants, automobile exhaust, and burning of firewood and dung cakes. Many respiratory problems are caused by air pollution. Now, substances or pollutants which are present in the polluted air. कौन कौन से pollutants है? Vehicles produce high levels of pollutants like carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen oxides and smoke. Carbon monoxide is produced from incomplete burning of fuels such as petrol and diesel. It is a poisonous gas. It reduces the oxygen carrying capacity of the blood. जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, we may die. Okay, so carbon monoxide is poisonous gas. क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड यदि एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, दिस इज आल्सो इनहेल्ड बाय अस एंड इट कंबाइन द हीमोग्लोबिन ऑफ आवर ब्लड. In this way, it reduces the oxygen carrying capacity of the blood. Thick fog-like layer in the atmosphere, especially during winters, is called smog.
SMOG, smog, which is made up of smoke and fog. Okay. Smoke may contain oxides of nitrogen, which combine with other air pollutants and fog to form smog. The smog causes breathing difficulties such as asthma, cough, and wheezing in children. Petroleum refineries are a major source of gaseous pollutants like sulfur dioxide and nitrogen dioxide. Sulfur dioxide is produced by combustion of fuels like coal in power plants. It can cause respiratory problems including permanent lung damage. Chlorofluorocarbons, CFCs. Chlorofluorocarbons, which are used in refrigerators, air conditioners, and aerosol sprays. CFCs damage the ozone layer of the atmosphere, which is also known as ozone hole. That is, CFC is responsible for ozone hole. Ozone layer protects us from harmful ultraviolet rays of the sun. Nowadays, less harmful chemicals are being used in place of CFCs. Automobiles which burn diesel and petrol also produce tiny particles which remain suspended in air for long periods. They reduce visibility. When inhaled, they cause disease. Such particles are also produced during industrial processes like steel making and mining. Power plants give out tiny ash particles which also pollute the atmosphere. Now there is one activity, prepare a table using the pollutants. तो इस कॉलम में हमने एयर पोल्यूटेंट लिखा है, ये सोर्स लिखा है और इसके क्या इफेक्ट होते हैं. Carbon dioxide, it is coming from vehicles and industries and its effect is suffocation, global warming. Carbon monoxide, vehicles and industries. Carbon monoxide poisoning. Okay, हमारी बॉडी के अंदर ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम कर देगा. That's why we can say blood becomes poison. That is known as carbon monoxide poisoning and global warming. Chlorofluorocarbons, refrigerators, air conditioners, aerosol sprays, etc. Depletion of the ozone layer. Nitrogen oxide, petroleum refineries, agriculture activities. We can say its effect is acid rain. We will discuss later on what is this acid rain. Sulfur oxide, combustion of fuels, industries, and effects are lung damage, acid rain. Now we will discuss one case study of the Taj Mahal. You are familiar with this Taj Mahal? कहाँ पर है ये? ये आगरा के अंदर है. Okay. Over the past 2 decades, India's most famous tourist attraction, we can say Taj Mahal, located in Agra, has become a matter of concern. Experts have warned that pollutants in air are discoloring its white marble. ताजमहल व्हाइट मार्बल का बना हुआ है, लेकिन पोल्यूशन की वजह से ये इसकी जो व्हाइटनेस है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है. सो इट इज नॉट ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट गेट अफेक्टेड बाय पोल्यूटेड एयर, बट नॉन लिविंग थिंग्स लाइक बिल्डिंग्स, monuments and statue also get affected. The industries located in and around Agra like rubber processing, automobiles, chemicals, and especially the Mathura oil refinery have been responsible for producing pollutants like sulfur dioxide and nitrogen dioxide. The gases sulfur dioxide and nitrogen dioxide react with the water vapor present in the atmosphere to form sulfuric acid and nitric acid. The acid drop down with rain, making the rain acidic. This is called acid rain. यानी कि ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, और ये एसिड रेन के साथ में जब नीचे आता है तो उस रेन को बोलते हैं आप एसिड रेन.
Acid rain corrodes the marble of the monument. The phenomena is also called marble cancer. Suspended particulate matter such as the soot particles, soot का मतलब होता है धुआं, काला धुआं, emitted by Mathura oil refinery has contributed towards the yellowing of the marble. यानी कि जो मार्बल का व्हाइट कलर है वो येलो होता जा रहा है. The Supreme Court has taken several steps to save the Taj. It has ordered industries to switch to cleaner fuels like CNG, compressed natural gas, and LPG, liquefied petroleum gas. Moreover, the automobile should switch over to the unleaded petrol in the Taj zone. Greenhouse effect. The sun's rays warm the Earth's surface. A part of the radiation that falls on the Earth is absorbed by it and part is reflected back into space. A part of the reflected radiation is trapped by atmosphere. The trapped radiations further warm the Earth. In greenhouse, in a nursery or elsewhere, देखिए ग्रीन हाउस का ये एक डायग्राम दिखाया गया है, आपने कहीं ना कहीं नर्सरी में देखा होगा. The sun's heat is allowed to get in, but it is not allowed to go out. यानी कि सन से जो हीट आ रही है उसको अंदर आने की परमिशन होती है लेकिन उनको बाहर नहीं भेजा जाता. इस तरह से क्या होता है, द ट्रैप्ड हीट वार्म्स द ग्रीन हाउस, यानी कि उसका टेम्परेचर इस तरह से मेंटेन रखा जाता है कि हीट को बाहर नहीं निकलने दी जाती है. ठीक है. द ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशंस बाय अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज सिमिलर. ये तो एक आर्टिफिशियल हो गया ग्रीन हाउस जो नर्सरी के अंदर बनाया जाता है, लेकिन सेम इसी तरीके से हीट रेडिएशन भी अर्थ एटमॉस्फेयर के द्वारा ट्रैप होती है, मतलब उससे बाहर नहीं निकल जाती, एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं निकलती, और इसी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर भी वार्म हो जाता है, उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट. Certain gases are responsible, but main gas is carbon dioxide. Other gases are methane, nitrous oxide, and water vapor. These are responsible for greenhouse effect. So these are known as greenhouse gases. Global warming. Carbon dioxide, CO2, traps heat and does not allow it to escape into space. As a result, the average temperature of the Earth's atmosphere is gradually increasing. This is called global warming. Excess of carbon dioxide in the air acts as a pollutant. But as we know importance of carbon dioxide, this is used by the green plants in the process of photosynthesis. But if it is present in the excess amount, this will act as a pollutant. Carbon dioxide is continuously being released because of human activities. On the other hand, area under forest is decreasing. Plants utilize carbon dioxide from the atmosphere for photosynthesis, thereby decreasing the amount of carbon dioxide in the air. प्लांट जब कार्बन डाइऑक्साइड को काम में लेते हैं तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कम होती है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है और फॉरेस्ट भी कम हो रहा है, इस वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है. सो वी कैन से डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड in the air because of the number of trees which consume carbon dioxide is reduced. Human activities thus contribute to the accumulation of carbon dioxide in the atmosphere. Global warming has become a major concern for governments worldwide. Many countries have reached an agreement to reduce the emission of greenhouse gases. The Kyoto Protocol is one such agreement. An increase in Earth's atmosphere by even as little as 0.5 degrees Celsius can have serious effect. The Gangotri Glacier in Himalayas has started melting because of global warming. Global warming, a serious threat. Global warming can cause sea levels to rise dramatically. Okay, global warming की वजह से ग्लेशियर्स पिघलेंगे
तो उनका पानी अल्टीमेटली कहाँ जाके मिलेगा, समुद्र में, सी में जाके मिलेगा, तो वह सी का लेवल बढ़ता जाएगा। एंड दैट्स व्हाई in many places coastal areas have already been flooded. Global warming could result in wide ranging effects on rainfall patterns, agriculture, forest, plants and animals. Majority of people living in regions which are threatened by global warming are in Asia. Now, what can we do to reduce air pollution? यूज CNG एंड अनलेडेड पेट्रोल। देखिए अनलेडेड पेट्रोल, कभी पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वहां पर आप ये वर्ड आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, अनलेडेड पेट्रोल विच इज लेड फ्री। एक्चुअली लेड इज ए वन मेटल विच कॉज द पोल्यूशन। ओके, यू कैन आल्सो ऑर्गेनाइज कैंपेन से नो टू क्रैकर्स। जब क्रैकर्स बर्न होते हैं तो भी पोल्यूशन होता है, स्मोक निकलता है। Generate awareness about air pollution among friends and neighbors. There is a need to switch over to alternative fuels instead of the fossil fuels for our energy requirements. Fossil fuels के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कोल, पेट्रोलियम, ये सब फॉसिल फ्यूल है, तो इनके बजाय हमें अल्टरनेट सोर्स हमें डेवलप करने, एंड दीज आर सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर एंड विंड एनर्जी। यूज वेरियस ऑप्शंस ऑफ कम्यूटिंग। व्हाट इज द मेन कम्यूटिंग, यानी कि आने के लिए, टू ट्रेवल ए लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम होम टू वर्क एवरी डे। ठीक है, यानी कि जो भी आदमी है अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं, डेली का काम है। इसी तरह से जैसे आप लोग डेली स्कूल आते हैं, घर जाते हैं, तो आपको मोटरसाइकिल या स्कूटर के अलावा कुछ नए ऑप्शंस पे विचार करना है। जैसे use various options of commuting to your school such as walking, going by bicycle, traveling by bus or other public transport। मतलब इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट के बजाय आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको यूज में लेना चाहिए। ट्रेवलिंग बाय कार पूल, एक ही साइड में जा रहे हैं तो एक कार में तीन चार आराम से लोग उसमें बैठ सकते हैं, इसको बोलते हैं आप कार पूल। वी कैन प्लांट ट्रीज एंड नर्चर का मतलब होता है पालन पोषण करना, द वंस ऑलरेडी प्रेजेंट इन द नेबरहुड। आप नए पेड़ लगा भी सकते हैं या ऑलरेडी लगे हुए हैं उनको आप नर्चर कर सकते हैं। सेलिब्रेट वन महोत्सव, व्हेन लाख्स ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड इन जुलाई एवरी ईयर। जुलाई, हर साल जुलाई महीने में वन महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है, तो उस समय आपको ट्रीज लगाने हैं। पुट ड्राई लीव्स इन अ कंपोस्ट पिट रादर देन बर्निंग। पेड़ों से जो भी ड्राई लीव्स गिरती है उनको जलाने के बजाय कंपोस्ट पिट में रखिए, तो दो फायदा होगा। एक तो जलाने से जो पोल्यूशन होता है उससे हम बच जाएंगे, और इससे आपको मैन्यूर बनेगा, उसको आप जो है फील्ड के अंदर काम में ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।